So those who are attending this session through the YouTube, you can also type in the chat box. Those who are attending this session through WebEx, they can also drop in the chat box now that my voice is audible to you all, and yep, screen is visible. So we are just waiting for a few more participants to join in, and we'll start the session shortly. So once again, a very good afternoon to all, and welcome all to today's session. My name is Rohit, and I'll be your host for this afternoon, and we'll be taking a session on Fin Nifty weekly option expiry. I'm having with me Mr. Karan, who is having a vast experience into the capital market, and who will be explaining you about the थैंक यू इस मेरा हमेशा का मानना रहा है कि अगर कुछ भी आपको अगर अंडरलाइन या कोई भी इंडेक्स अगर आपको एनालाइज करना है यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द प्राइस एक्शन फर्स्ट and that has always been my theory and on my chart the charting software that I'm using is TradingView. So अगर आपको at par रहना है with what we are discussing here then you can go on to TradingView and यहाँ पर आपको तीन मूविंग एवरेजेस दिखाई देंगे 5, 13 एंड 21 एंड नीचे जो है हम लोगों ने एक RSI प्लॉट कर रखा है. सो if we can start with our regular स्टफ की मतलब आप लोग सबसे पहले तो चैट बॉक्स में आपके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस डाल दीजिए जो भी टेंटेटिव आपके रहेंगे एंड आपके हिसाब से जो भी रेजिस्टेंसेस है एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल अ वेरी शॉर्ट रीजन एज टू व्हाई यू डिड इट. एक वर्ड में दो वर्ड में अगर आप डाल पाओ तो प्लीज डू दैट ऑल्सो. So what we'll do is we'll directly start off and because मेरा position
जो भी मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर द डे. व्हाट आई डू इज आई लुक एट द इंट्राडे चार्ट्स फर्स्ट. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज प्रिफर डूइंग, जो मैं सबसे पहले चीज करता हूँ, दैट इज जो मोस्ट ऑब्वियस मुझे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसेस दिखाई देते हैं, आई जस्ट प्लॉट इट आउट. सो फॉर एग्जांपल अगर आप सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नीचे प्लॉट किया हुआ है. नाउ आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट. नाउ कोई ऐसे बोल सकता है कि प्रोबेबली दिस सपोर्ट जो है वो काफी बड़ा है, बट देन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर, हम लोग अभी 15 मिनट चार्ट पे फोकस करें. सो मेरा फर्स्ट सपोर्ट तो वहां पर बन गया है. अभी मैं अपना रेजिस्टेंसेस प्लॉट करता हूँ. या सो मेरे पास फिलहाल चार्ट पर तीन लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे. एक जो है वो आ रहा है अराउंड 22,500, 23,300 का है. एंड देन एक जो बहुत थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट इज अराउंड 23,500. नाउ जो लोग ये हमारे वेबिनार से जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट ब्रश अप ऑन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. सो हमारे वेबिनार्स में वी हैव बीन एक्सप्लेनिंग कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस कैसे बनते हैं. सो सबसे पहले आप जब भी चार्ट ओपन करोगे आपको ये देखना है कि वहां पर ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां से प्राइसेस घूमे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो 6 अगस्त को एंड 14 अगस्त को अराउंड 22. या सो अगर आप देखो तो अराउंड 25 जुलाई वहां पर एक टच पॉइंट था. एंड देन देर वॉज अ बिट ऑफ हर्डल अराउंड 8 अगस्त. देन एक सपोर्ट बना अराउंड 12 अगस्त. एंड देन ये जो 19 अगस्त का है, मतलब जो कल का जो लो है, वहां से हम लोग को एक शार्प बाउंस दिखाई दे रहा है. सो ऑल इन ऑल वी कैन कंक्लूड कि जो दो इमीडिएट इसके जो सपोर्ट्स आएंगे दैट इज प्रोबेबली अराउंड 22,800 एंड 22,500. 22,500 एट बिकॉज इट इज एक्सपायर शूट अप होती है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द लेवल्स. नाउ मैं रेजिस्टेंस की तरफ देखूंगा. रेजिस्टेंस के लिए मैं चार्ट थोड़ा जूम आउट करूंगा. मैं देखूंगा कि कहाँ से इसने प्रीवियस सपोर्ट लिया है. बिकॉज अगर समझिए कि कोई एक इंडेक्स है या कोई अंडरलाइन है जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, एंड इफ इट स्टॉप्स एट वन पॉइंट, करेक्ट, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे इट वाज काइंड ऑफ इन अ डाउन ट्रेंड. ये जो पूरा फेस है, इसको मूव कर देता हूँ. या सो ये जो पूरा फेस है ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में था. ये जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तो आपने देखा कि इसको थोड़ा हर्डल आ रहा है अराउंड 22, वो ब्रीच हुआ एंड वो ऊपर जा रहा था. 23,500 में थोड़ा रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दिया. सिमिलरली अभी देखिए कि ये जब भी 23,500 पे रेजिस्टेंस ले रहा था तभी एक नया सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग बन गया था दैट वाज अराउंड 23,300. एंड नाउ लुक एट वेयर द प्राइस इज 23,300 लेवल. सो कोई ऐसा प्राइस लेवल होगा जिसमें प्रीवियसली सपोर्ट्स लिए हो या प्रीवियसली रेजिस्टेंसेस लिए हो. सो जब भी प्राइस वो लेवल पर जाकर टेस्ट करेगा देर इज अ चांस दैट इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. उसको हम लोग चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसको, बट जनरल टेंडेंसी यही है कि जो भी कोई ट्रेंड होगा एंड इफ प्राइसेस आर हॉल्टिंग, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, अगर कहीं पे भी प्राइस थोड़ा भी हॉल्ट हो रहा है एंड कंसिस्टेंटली हो रहा है उस लेवल पे, तो वो लेवल का सिग्निफिकेंस थोड़ा बढ़ जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट मैंने थोड़े सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट कर दिए हैं. वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 23,300 एंड अगर उसके ऊपर वो निकल गया देन द नेक्स्ट लेवल दैट आई विल बी लुकिंग फॉर इज 23,500. नाउ एक चीज मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ वेबिनार्स में कि अ चार्ट और अ टेक्निकल एनालिसिस विल ऑलवेज गिव यू अ ब्रॉडर रेंज. वो एग्जैक्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिन पॉइंट करके नहीं देगा, बट वो आपको एक ब्रॉडर रेंज दे देगा कि यहाँ से यहाँ पर हर्डल है, यहाँ से यहाँ सपोर्ट्स है. नाउ इंट्राडे देखने के बाद वन माइट कंसिडर गोइंग टू अ स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम जस्ट सो दैट आपको डेटा ज्यादा मिल जाए. तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि अराउंड 7 अगस्त, सॉरी 6 अगस्त एंड 14 अगस्त का जो लो है वहां पे देयर इज काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न. एंड आरएसआई में यहाँ पे कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है. इफ समवन कुड टाइप इट इन द चैट बॉक्स कि आरएसआई में क्या एक इंटरेस्टिंग चीज है व्हेन प्राइसेस आर फॉर्मिंग क्लोज लोज एंड RSI थोड़ा बता रहा है कि there is a bit of a momentum pickup, so that also becomes a sign.
सो वहाँ से मैंने यहाँ पर आके कंफर्म कर लिया कि द एम्फोसिस ऑफ 22,500 एक्टिंग एज अ सपोर्ट गोज अप सिग्निफिकेंटली बिकॉज एक दो टच पॉइंट्स थे एंड यहाँ पर भी ये प्रीवियस हाई था जहाँ पर आके उसने सपोर्ट लिया, दैट इज फेयर इनफ। एंड देन यहाँ पे मुझे आरएसआई का भी कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो सेकंड फॉल था उसमें डाउन साइड में मोमेंटम थोड़ा कम था। करेक्ट, जो सेकंड फॉल था यहाँ पे अगर आप देखो तो मोमेंटम थोड़ा कम था ये फॉल में। एंड ऑल इन ऑल मुझे एक और दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं कि एक प्रॉपर डब्ल्यू काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। एंड एट द मोमेंट वी आर अबाव द नेकलाइन, डब्ल्यू का नेकलाइन मतलब देर इज वन ड्रॉप, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, देन देर वॉज अनदर ड्रॉप विच इज वेरी क्लोज टू, और जो लो होता है वो सिमिलर होता है दोनों में, विच इज द केस इन दिस सिनारियो। तो ये जो मेरा लेवल है, जो फर्स्ट ड्रॉप के बाद जो एक ऊपर जाने का पॉइंट बनता है जहां पे रेजिस्टेंस आता है उसको, दैट बिकम्स माय नेक लाइन। एंड वहां से अगर आप देखोगे तो अभी वी आर करंटली प्लेस्ड अबव इट। सो ऑल इन ऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे कुछ आइडिया दे रहा है कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। एंड देन आई जस्ट गो ऑन टू द डेली चार्ट्स, मैं देखूंगा कि ओके ये कहाँ पे बना था। ऑल राइट, सो ये जो फिबोनाची हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ये हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले किया था। अगर आपने प्रीवियस वेबिनार्स में हमारे अटेंड किए होंगे, यू हैव सीन दिस कि हम लोगों ने ये कैसे प्लॉट किया। एंड मैं यहाँ पे इंट्राडे लेवल जितने भी बनाए हैं मैं निकाल देता हूँ सो दैट चार्ट क्लीन हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए इट इज वेरी क्लोज टू द 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड अभी हम लोग कहाँ पे प्लेस्ड है, इट इज मूविंग अबाउट 23.6%। सो ऑल इन ऑल मुझे एक आइडिया लग रहा है कि क्या हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो फॉर द डे इट हैज ऑल्सो ब्रोकन अबाउट द 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सारी चीजें मुझे फेवर में लग रही है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई प्रिफर टू डू इज गो टू एनएसई इंडिया। ठीक है, मैं एनएसई इंडिया में जाके फिन निफ्टी, सो मुझे यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिख जाता है। आई ओपन दी ऑप्शन चेन। नाउ आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो मैं करंट एक्सपायरी का ही देखूंगा बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ ट्रेड दैट आई विल क्लोज बाय 3:30। सो ऑप्शन चेन देखने के लिए मैं नीचे नीचे इसमें स्क्रॉल करते जाऊंगा एंड मैं एरिया देखूंगा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिखाई दे। सो ऑप्शन चेन अगर कोई फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप थोड़ा ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल्स हैं एंड राइट हैंड साइड में आपके पुट्स हैं। एंड अनदर थिंग जो मैंने मेंशन किया हुआ पहले, आप दो कलर्स इसमें देख पाओगे। वन इज अ हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे ऊपर में, एंड जो नीचे वाला जो है जो दैट इज अ लाइट एरिया। सो हाईलाइटेड एरिया जो है वो होता है हमारे हमारे आईटीएम्स। एंड अगर आपको समझना है कि आईटीएम्स क्या है, प्लीज रेफर टू आवर ओल्डर वेबिनार्स। सो आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्स में अगर मैं बात करूं, से फॉर एग्जांपल अभी इंडेक्स चल रहा है से 23,000। सो एनीथिंग दैट इज बिलो माय करंट प्राइस, जो भी स्ट्राइक है दैट इज बिलो माय करंट प्राइस, फॉर एग्जांपल 23,900, 23,800, provided the current market price is 24,000, तो 23,800, 23,900 ये सब जो है वो होते हैं मेरे आईटीएम्स। एंड उसके ऊपर वाले जितने भी कॉल्स हैं वो मेरे ओटीएम्स होते हैं। पुट में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको एकदम डिटेल में नहीं जाना है कि व्हाट इज आईटीएम व्हाट इज ओटीएम, ऑल यू कैन डू इज लुक एट द शेडेड एरिया, लुक एट द लाइट एरिया। नाउ एक कॉमन एरर जो लोग करते हैं बिकॉज ऑफ विच पीपल एंड अप लूजिंग मनी is they look at something called as सस्ता ऑप्शन, ऐसे सब देखते हैं, मतलब वैल्यू के हिसाब से जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। करेक्ट, सो और आफ्टर टेकिंग दैट, कोई समझे 10 रुपए का कोई ऑप्शन है या कोई 5 रुपए का ऑप्शन है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से अगर जो मोस्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स आपको गैमा ब्लास्ट ऐसे सब जो टर्म्स या जो जार्गन्स यूज करते हैं वो आपको लगता है कि दैट माइट प्ले, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्लेइंग इज वेरी लेस बिकॉज एक हाल ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जैसे कोविड सिचुएशन था। करेक्ट, इफ यू वर ट्रैकिंग द मार्केट्स ड्यूरिंग कोविड, आपको एक चीज ध्यान में होगी कि 15 मिनट में सर्किट लग गया था, देन देर वॉज अनदर सर्किट, एंड 2-3 दिनों में आपने देखा था कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। ऐसे सिचुएशन अगर हुआ जहां पे वोलेटिलिटी आपकी ड्रास्टिकली एक्सपैंड हो गई, तो आपके जो एकदम ओटीएम मतलब एकदम फार ओटीएम्स है वो आपके आईटीएम हो जाएंगे। इन दैट केस इट्स अ नो ब्रेनर, आप पैसा कमाओगे। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन है
अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि से मैं अभी से 30 का हूँ, करेक्ट। मेरे लाइफ टाइम में मैंने एक ही कोविड जैसा सिचुएशन देखा है, करेक्ट। एंड प्रोबेबली दूसरे के वजह से मार्केट फॉल्स जितने भी मैंने देखे दे आर थ्री। एक मैंने 2008 देखा हुआ है, मैंने 2014-15 का स्लो डाउन देखा है, एंड जो तीसरा है वो कोविड है। सो ऐसे टाइम में आप वॉलेटिलिटी एकदम एक्सपैंड होने का या ऐसे कुछ आप देख सकते हो। सो इन माई 30 years of lifetime, I have seen drastic volatility probably 3 or 4 times, because एक बजट डे भी एक कैंडल था। सो 4 टाइम मैंने 30 years में ये सिचुएशन होते हुए देखा है। अभी आपको एक ही बात, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि क्या 30 साल में जो चीज 4 बार या 5 बार हुई है, आज के ट्रेड में मेरे साथ क्या वो हो सकता है? एंड जवाब आप ही को मिल जाएगा कि नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा आईटीएम है, कौन सा ओटीएम है, एंड देन यू हैव टू टेक, अगर से आपका व्यू बुलिश है, टेक आईटीएम के एक आगे वाला ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ माय व्यू इज बुलिश हाइपोथेटिकली, एंड अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 23,200 जो है दैट इज आईटीएम, एंड अराउंड 23,250 का जो है वो मेरा एटीएम हो जाता है। 23,300 इज माई क्लोज टू आईटीएम। सो अगर मार्केट में अप मूव आ गया, एंड वी हैड डिटरमाइंड यहाँ पे कि माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुड बी प्रोबेबली अराउंड 23,370। सो आई वुड बी बेटर ऑफ, मतलब अगर मैं 23,300 का कॉल लूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज मच हायर rather than purchasing probably at 23,800 या 24,000 का मैं अगर कॉल परचेस करूं, तो प्रोबेबिलिटी मेरा 23,300 का प्रॉफिट में आना इज मच हायर। I'll just go back to the option chain. यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? इज इट क्लियर? जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है बातें? प्लीज, अगर आपको कुछ क्वेरी है इसमें, प्लीज मेंशन, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज हाउ कैन यू सेलेक्ट द स्ट्राइक, हाउ शुड यू सेलेक्ट द स्ट्राइक, एंड द मिस्टेक्स। जो एक मेजर चीज होती है ना, कि मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। द स्मार्टर थिंग टू डू इज लुक एट अदर्स मिस्टेक एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दैट मिस्टेक, कि आप दूसरों की गलती देखो एंड आप वो गलती नहीं दोहराओ। वो एक चीज होती है, या तो फिर आप गलती करो, उसमें से सीखो, एंड देन आप करेक्ट स्टेप्स लो। सो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स जो है वो क्या होते हैं। सो अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ डाउट है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। So those, if you are having any queries related to the option chain data, then request you to please put in the chat box. Those who are attending this from our YouTube channel, you can also post your this queries into our live chat box. Strike price, please. या ठीक है, स्ट्राइक प्राइस प्लीज क्लैरिफाई। सो आई एम अज्यूमिंग आप मार्केट में, सो इज इंग्लिश फाइन और हिंदी फाइन, और मिक्सचर ऑफ बोथ इज फाइन? जस्ट टाइप इन इंग्लिश, हिंदी, whatever. Okay. So strike price is basically whenever you're looking at an option contract. Okay. So option contract, um, so I'll start with how option works. तो मैं आपको, I'll be able to explain it to you in a better way. So in my previous webinar, I had mentioned a case wherein I want to buy Rohit's phone for 20,000, correct? Now, the reason I'm doing it is because I feel that the price of the phone that Rohit owns might shoot up if I want to buy a new phone, correct? Yeah, if I want to buy a phone that is similar to what he owns. So what I do is I fix a price, correct? That I am telling him that I'll buy this phone probably in 1 week at 20,000 from you. So 1 week becomes the expiry. As in, if I don't purchase the phone within 1 week, Rohit can completely keep the premium. But if I have to purchase the phone, I have to pay him 20,000. Amount of 20,000, that is my strike price. I'll explain it to you in terms of the stock market. So I am, say for example, we are currently at 23,200. I am seeing that there is a big bullish momentum build up, and I
could probably see, say, the Nifty Financial Services move higher towards 23,400, 23,500. This is what we determined through our charts. So what I'll do is I will purchase a call. Call as in I expect it to move higher. And as we have determined that 23,300 की probability सबसे ज़्यादा है. So when will I start making money? When the market goes above 23,300. Correct. So that is my that you can consider kind of like a buy price. Buy price matlab you are betting that for the day the underlying will go above a certain price. That certain price that is actually defined by the exchange. So you have to select that price. That is called a strike price. So अगर आप यहाँ पर देखोगे in the option chain you have multiple price matlab multiple strikes, so you have to select one strike from there. And so your bet will be that the closing today, if I am planning to exit the position today or it is expiry today, say if you went long a 23,300 call, correct, so your bet is that the market will close above 23,300 today. So that the price that you're locking in, the price that you see on your in the strike, that is basically your bet. You okay? So स्ट्राइक प्राइस एक आपके कॉन्ट्रैक्ट का ना, कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी आप एंटर करोगे देर इज ऑलवेज अ वैल्यू. अगर आप घर खरीद रहे हो तो आपको एक वैल्यू होता है. सो वो वैल्यू इज काइंड ऑफ लाइक स्ट्राइक प्राइस. करेक्ट. सो यहाँ पर जब आप 23,300 का कॉल परचेस कर रहे हो, सो आप ये बोल रहे हो कि से फॉर एग्जांपल मैं और रोहित ही वी आर द मार्केट. करेक्ट. सो मैं रोहित को बोल रहा हूँ कि आज मेरा ये बेट है कि आज 23,300 के ऊपर मार्केट क्लोज होगा. करेक्ट. So Rohit बोलेगा ठीक है, that is fine. I pay the premium. Rohit receives the premium, and we enter into a contract. That is basically an option. So अगर 23,300 का जब भी मैं कॉल परचेस करूंगा, so मुझे प्रॉफिट कब मिलेगा? जब मार्केट 23,300 के ऊपर जाएगा. अंडरलाइन, जब मैं मार्केट बोल रहा हूँ मैं अंडरलाइन बोल रहा हूँ, इट कैन बी एनी अंडरलाइन. मुझे प्रॉफिट तब होगा जब ये 23,300 के ऊपर क्लोज होगा. करेक्ट. सो वो जो प्राइस जो पहले ही डिटरमाइंड होता है कि ये प्राइस इज व्हाट आई एम बेटिंग ऑन, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक प्राइस. सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब देर इज समथिंग कॉल्ड वॉलेटिलिटी. मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ. वॉलेटिलिटी अगर आप देखो तो इट इज बेसिकली द मूवमेंट. वॉलेटिलिटी में आपको डायरेक्शन नहीं है. वॉलेटिलिटी एज इन okay, how is IV calculated? Okay, that's a very complicated formula, and to be very frank, it is way one way. Implied volatility, I'll tell you what it means. So, and I could probably hint at how it can be used, but the IV calculation is a very complicated mathematical tool. If you have heard of Black and Scholes and all those things, that is how options are priced. So you have to get to that level, and I'm not sure if most of them here are actually at par with that. So IV calculation I'll not explain. मैं आपको IV बोलता हूँ कि क्या है. So market में there is a volatility as in there is movement होता है during the day. So अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, so there is one particular एक range मुझे पता चल जाता है कि in a day it moves by say 100 points, 200 points, hypothetical situation again. But कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पे there are events. Say for example budget है and something positive for the financial services is expected. So by default ऐसे होगा कि उस दिन का जो movement है it will be way above 100. बिकॉज हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन मेरा पार कर जाए एंड वी सी अ बिग मूव इन द फाइनेंशियल सर्विसेज. और ये भी हो सकता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना भी नहीं आया. सो इट कैन ऑल्सो कम डाउन. सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट वॉलेटिलिटी. सो आईवी जो आपका होता है दैट इज बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. वो आपको ये बोलता है कि मार्केट एट दिस, आई मीन व्हेन आई इन दिस कॉन्ट बोलता हूँ, आई मीन द पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द अंडरलाइन टू मूव. Correct. So it is also like how you price in the insurance premiums.
मतलब अगर आपकी IV हाई है, your option contracts are costlier. Now for explained webinar, I had mentioned that if I have to insure a property against earthquake and tsunami in Japan, वहां पे मेरा प्रीमियम ज्यादा होगा. Why? Because the probability of a earthquake and tsunami in Japan is way higher than probably somewhere in Maharashtra. यहाँ पे probability नहीं है ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है. But the point is कि यहाँ पे probably हम लोग को 10 साल में एक बार कुछ ऐसे earthquake दिखाई दिया होगा. But in Japan it is probably 10 times a year. So जितना ज्यादा probability है of that thing to happen, उतनी ज्यादा आपकी premiums होती है. So implied volatility ये देख रहा है कि what is the probability market move, not the probability, what is the volatility that the market is expecting. Correct. So invariably there is a constant figure, and now I'll introduce you to historical volatility. IV is always compared with historical volatility. Historical volatility मतलब अगर यहाँ से मैं 10 दिन पीछे देखूँ या 15 दिन पीछे देखूँ, मैं देखता हूँ कि on an average ये कितना move हुआ है. So then the option traders, these are prop guys, they check and compare how the IV is placed with respect to historical volatility. Correct. So at one point अगर कुछ event नहीं है and I am looking at say historically I have seen a 20-point move, and my IV is currently pricing in a 30-point move without any event. So लोगों को पता चल जाता है कि लोगों को पता चल जाता है कि a particular option is is costlier or cheaper. So why IV for different? Yes, see, जैसे मैंने explain किया, correct. Nifty say for example अभी 24,000 पे है, and I am looking at a 24,100 call. The probability of Nifty going 100 points is much higher than Nifty going 1000 points. Correct. 24,000 पे अभी मेरा current market price है, and I am looking at a call of say 24,100 and 26,000, which is a fair, मतलब आप मुझे chat में बोलिए कि which is more probable कि वो ITM में end होगा, if there are no events or if there are events. कभी ऐसे इवेंट है जहाँ पे मार्केट 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स, ऐसे निफ्टी में बोल रहा हूँ, 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स आपने मूव होते हुए देखा. करेक्ट. 24,100 एंडिंग अप ITM इज वे हायर. That is why the volatility for different option contracts is different. For different strike prices is different. Explain volume. So I will explain this to you in terms of the spot. So volume में आपको basically बोलता है कि कितना participation रहा है यहाँ पे in a particular underlying. And one more thing, volumes are much more significant when it comes to some sort of pattern breakouts and all those things. In options, I personally prefer, I mean, both OI and volume can be used, but according to me, looking at OI concentration is slightly better, especially for a retail trader, because we get to know that what is the kind of unwinding, what is the kind of addition, what is the kind of um, short build up, all those things are being explained. And if you want to get a detailed understanding of all these things, we do have our reports that are sent out during expiry, so you can have that, or we can probably conduct another session wherein we explain it to you in detail. So So there is one question from our YouTube channel that should we buy ATM? If you can just explain on this. yeah, so you have to understand Greeks for that. Greeks मतलब ना ऑप्शन, मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑप्शन प्राइसिंग जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. सो देर इज समथिंग कि आपका अंडरलाइन से फॉर एग्जांपल 10 रुपए से मूव होता है, तो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने से मूव होगा. करेक्ट. सो उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं. सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो एटीएम का डेल्टा है दैट विल ऑलवेज मूव फास्टर देन द आईटीएम डेल्टा. करेक्ट. उसका रेट ऑफ चेंज विल बी फास्टर. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अगर आप एटीएम परचेस करोगे, एटीएम मतलब कि कॉमनली से दैट इट्स अ 50 डेल्टा, इट्स आईटीएम इज प्रोबेबली 60 70 80 डेल्टा. सो but the probability of a 50 delta getting to a 60 or 70 delta is much faster than a 80 delta call that can go to 85 or 90 delta.
So it is a bit of a complicated ये calculation again, but अगर आपको एक ही देखना है कि डायरेक्शन अगर आपको पकड़ना है, then the best thing is to take a ATM or close to money. जब भी मैं close to money बोलता हूँ, say for example यहाँ पर if currently my market is trading at 24,000, I would probably look at 24,100 and not 24,000, because if there is a significant move, my 24 100 call, if the probability of my 24 100 call becoming ITM is higher, आपने देखे होंगे कि ऑप्शन प्राइसेस सडनली जो शूट अप होते हैं, देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज वेगा, मतलब देयर इज वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, देन देयर इज गैमा का एक इफेक्ट आएगा डेल्टा पे. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इट इज ऑलवेज बेटर टू प्ले विथ ATM देन गोइंग लॉन्ग एन ITM. बट एक चीज आपको इसमें बहुत क्लियर रखना है कि यू शुड हैव अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. Never trade without a stop loss. That is the first step to a disaster. So always play with a stop loss, and as a retail trader, always look for option contracts that are closer to the market rather than looking at deep out of the money contracts. Though deep out of the money is much more cheaper, but due to the Yeah. theta value, time value, that Yeah. get erased. Exactly. Right. Okay. Very well answered. Yeah. Thank you, Karan. So यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? So preferred stop loss, I like to look at charts to understand what my stop losses ideally should be. So अगर आप of your technical parameters, if you are taking into consideration a stop loss, you should be good. We will also conduct training series on technical analysis, in that we can actually mention a few things about a stop loss. So that can be done. Any other queries? So if there are no queries, then we can conclude the session today. Thank you. Welcome. See, अमोक जी, आप अगर ऑप्शन का चार्ट देख के अगर आप परचेज कर रहे हो, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो जैसे मैंने बोला कि अंडरलाइंग इज व्हाट यू हैव टू लुक एट. अगर मैं कोई 100 रुपीज का अगर ऑप्शन परचेज कर रहा हूँ, आई विल लुक एट दी अंडरलाइंग, द प्राइस मूवमेंट इन दी अंडरलाइंग, द प्राइस एक्शन इन दी अंडरलाइंग. अगर मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्हेन वी वर लुकिंग एट द चार्ट्स, आई सेड ये थोड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड आई सॉ दैट इट इज मूविंग अबव द नेकलाइन ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न. सो आई मेरा आइडियल लेवल या जो मेरा रेड फ्लैग लेवल होगा, दैट इज दिस 23,150. सो थोड़ा बफर रख के आई वुड राउंड इट ऑफ प्रॉबली टू 23,070, 23,075. That is how I would recommend, someone who does option trading, that this is exactly how you have to maintain a stop loss. Option premium का percentage लगा के, there are ways, there are things that people do, but I'm not sure how well it works, because I'm a hardcore technician and I believe in price action. So अगर मेरा लेवल मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहा है, if the probability of my option contract ending ITM goes down, the first thing I would like to do is square off my position. And another thing about keeping a stop loss of option premium, अगर आप उसका कुछ एक percentage या उसमें अगर आप डाल रहे हो ना, there are situations जहाँ पे the closer you get to expiry, the option premium, it starts decaying faster, because the probability of it ending ITM keeps on coming down. So उसके वजह से भी हो सकता है कि कभी आपका stop trigger हो जाए. So that is one of the pitfalls of having a stop loss on the option premium. So this is something that I would personally do. Look at the charts, keep in mind what are my support levels, and अगर वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है, then revisit the chart, check if there is a genuine weakness, and if there is a genuine weakness, then keep a level in mind, जिसके नीचे जाएगा तो just square off the position.
Anybody has any other query? Else we can end the session. So those who are attending the session first time, just want to inform you that we conduct the session every Tuesday and Thursday. So every Tuesday, Wednesday, and Thursday, the session is at 12 p.m. So today was the Fin Nifty expiry. So Karan has given the view on the Fin Nifty. Tomorrow is the Bank Nifty expiry, and day after tomorrow it will be the Nifty 50. So you can also join our session for this Bank Nifty and the Nifty 50. So those who are attending this session through WebEx, means I'll just share the link on the chat box so that you can register yourself for the tomorrow session that is on Bank Nifty. Also, those who don't understand anything about the options or you are not aware that how the options work, then on every Friday at 4 p.m. we conduct the session on that's a terminologies on the option, that how options works, how the options moneyness works, that is about the ITM, ATM, and OTM, how the delta works, how the theta works. So that is like you can attend it. So the link is not same. There's a different link. So I have shared the link in the chat box. You can register yourself, and also I'll just share this YouTube channel link so that you can like and subscribe this channel, and you can get notified for the tomorrow session also. Yeah. So here's the YouTube channel link. You can refer this video recording also. This will be already uploaded in our YouTube. So thank you so much all for attending today's session, and thank you so much the people who are attending this session from the YouTube. Thank you. See you all tomorrow.